lists or instruction sets in order to accomplish certain tasks from those machines. Okay? So ILs या instruction lists are commonly known as the machine language. Machine language क्या चीज है? वो language जो कंप्यूटर को उस खास कंप्यूटर को समझ आती है. ठीक है? So basically machine language is the computer's mother tongue. ठीक है? जैसा हमारा मुख्तलिफ लोगों का है, पश्तो पंजाबी हो गया या जो भी सराइकी है वगैरह. ठीक है? इसी तरह कंप्यूटर का जो वो है मदर टंग है, that is machine language. ठीक है? So this is the simplest and the most primary language that we can use to give commands to our computer. Okay? The instruction lists are known as the machine language, and using those machine languages, we can ask the computer to carry out certain tasks. अच्छा जी. अच्छा, machine language. Computer जो है, computer is a digital system, a digital electronic system. ठीक है? Digital के मतलब क्या हुआ? You have zeros and ones. ठीक है? Zero means there's nothing. One means there's a pulse over here. Okay? So this is 0 and 1, 0 and 1, 0 and 0 and 1. Okay? Ye 0 ho ye 0 ho ye 1 ho gaya. Okay? So these are digital systems. Okay? Digital systems. So computers are basically digital systems, digital binary systems. ठीक है? आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है, हार्डवेयर है, that follows a number based two systems of zeros and ones. So मतलब क्या हुआ? It only understands two binary states, zeros and ones over here. ठीक है? So आजकल जो computers हैं, basically they are using the hexadecimal number system, which is interrelated to binary system. इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे. आप आजकल मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स है जो सलमान साहब पढ़ाते हैं, तो उसमें आप काफ़ी डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे आप. ठीक है? So basically, what is a computer language? Machine language. Machine language is a system of instruction or set of instructions and data executed by a computer's CPU. कोई बता सकते हो what is a CPU? ये central processing unit. बिल्कुल, central processing unit जो है, central processing unit, this is the heart of the या core या brain of the overall computer. ठीक है? You have basically you have the CPU, you have the input, and you have the output over here. ठीक है? So the brain of the computer, which does all of the computation, that is done by the central processing unit जो हो गया आपका. ठीक है? तो machine language is a system of instructions and data that is executed. Executed मतलब run या किसी कोई operation perform करता है. ठीक है? जो चीज operation perform करती है, that we call executed. ठीक है? In programming language, executed by the computer's CPU. ठीक है? By executing means run basically. ठीक है? Run या इसको आप उसको execute करते हैं, उसको perform करते हैं. ठीक है? So the computer performs some tasks based on the instructions and the data that you provide to the computer. Okay? So this is an example of a language of a machine language. Okay? Zeros and ones. Each of these line is an instruction. Okay? आप देख सकते हैं कि I am being a professor. I don't know what each of these lines of code, these lines of digits mean. ठीक है? ये एक instruction है, कुछ का खास काम वो करेगा, perform कर रहा होगा. ये कुछ और खास काम परफॉर्म करा होगा, ये कुछ और खास. ठीक है? So you can see that it is quite difficult to comprehend what these lines of digits mean over here. ठीक है? So computer, अच्छी कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी. So computer programming is an act of composing. ठीक है? What is computer programming? Computer programming is an act of composing. Composing मतलब क्या है? To write something. ठीक है? To compose compose a document means to write a document, to create a document. ठीक है? So it's an act of composing the selected commands or instructions in order that it will cause a desired effect. मतलब क्या हुआ कि आप कुछ खास computer programming में you write a certain set of instructions using some set of commands, allowable commands or instructions in order to accomplish a certain task. Okay? So the desired effect or outcome is left to the programmer's intention. For example, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर है एक वेरिएबल उठाए a और उसमें एक और वेरिएबल b वो करे, so this is an instruction. ठीक है? This is an instruction. और इसी तरह this is a single instruction. इसी तरह जब I compose a set of list of instructions, that is forms my own program. ठीक है? And that program will be able to perform a certain task. ठीक है? और
किस किस्म का टास्क परफॉर्म करता है, दैट इज लेफ्ट टू द प्रोग्रामर, ठीक है, कि प्रोग्रामर की इंटेंशन क्या है, कि प्रोग्रामर क्या वो उसका मकसद क्या है, कि वो कंप्यूटर से क्या वो करना चाहता है, कौन सा टास्क, कौन सा स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट करना चाहता है, ठीक है. सो इट इज लेफ्ट टू द प्रोग्रामर्स इंटेंशन, इमेजिनेशन, नॉलेज एंड आल्सो द एक्सपीरियंस ओवर हियर, ठीक है. So it is possible for a computer program to be coded directly into machine language using the elementary instruction. Elementary instructions कौन से हैं, जो अभी हम जो देखे थे यहाँ पे. These are the elementary instructions. These are the basic instructions. ठीक है, machine language में जो instruction है, उसमें उसको any programming programmer can also use these sort of elementary instructions to write some certain code to a computer. ठीक है, for a computer. लेकिन these are quite difficult. These are quite difficult. The major drawback of using elementary instructions is that it is quite tedious. Tedious मतलब कि quite मुश्किल है, time consuming है, and also it is quite susceptible, highly susceptible to human errors. For example, एक instruction है, या for example इसी उसको देख लेते हैं, ठीक है, इसी को उसको देखते हैं यहाँ पे, for example, ठीक है, these are lists, a sequence of zeros and ones. Let's say एक प्रोग्रामर जो है, प्रोग्रामर यहाँ पे इसने ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, फिर ये इंस्ट्रक्शन लिख लिया, उसको पता है कि these different sequence of instruction will carry out a certain task. तो यहाँ पे जाके let's say उसने गलती से 0 के बजाय उसने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ कि उसका पूरा इंस्ट्रक्शन जो है उसका मकसद ही टोटली डिफरेंट हो गया, ठीक है. So this instruction will be totally different, and it will be quite difficult for the programmer to find out where there is problem, ठीक है, कि उसने गलती कहाँ पे की हुई है, ठीक है. तो आपके पास इसी तरह ये तो just these are 1 2 3 4 5 6 lines of codes हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास 100 है तो उसमें एक गलती निकालना कितना मुश्किल काम, सही है ना. तो this is quite difficult when you're programming a computer using elementary instructions, ठीक है. काफी मुश्किल काम है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन को लिखना zeros and ones में, और टाइम कंज्यूमिंग भी काफी है, और it is quite prone to the human errors as well, ठीक है. But it was the only way of programming a certain computer in the early stages of computer technology. Like back in the 1950s and 60s, scientists जो थे या engineers जो थे, they were using the elementary instructions to program a computer to carry out a very simple task. For example, A plus B करना था. A plus B के लिए भी they were using many 100 lines of codes to carry out a certain task, ठीक है, using the elementary instructions. So it was only available method of programming, and it quite quickly revealed its serious flaws. ये जो flaws थे जो हमें अभी mention किए हैं, ये वहाँ पे पता चले कि this is quite serious flaw, and इसको कोई और तरीका ढूंढना होगा in order to write computer programs, ठीक है. So programming in machine language requires full knowledge of a computer internal architecture. अगर आपने वो करना है, elementary instructions को use करना है, ठीक है, तो you must know the computer underlying जो computer architecture है, उनका जो underlying internal hardware structure जो है और design जो है, उसके बारे में काफी आपको knowledge होनी चाहिए in order to write a certain program, ठीक है. This also means that if we change the design of a computer, ठीक है, अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करते हैं, so it will make the programmer's entire knowledge unusable. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो नॉलेज है, बेस आर्किटेक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर की, हार्डवेयर आर्किटेक्चर की जो नॉलेज है, उसको सबसे पहले उसको सीखना, और फिर उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग, उसी आर्किटेक्चर के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, उसको सीखना है. दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क इन इट्स ओन, ठीक है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी ने किसी तरीके से सीख भी लिया, ठीक है, तो फर्दर डाउन द लाइन अगर आप अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका मशीन लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा. उसी इंप्रूवमेंट के उसी चेंजेस के मुताबिक आपने अपने मशीन लैंग्वेज को भी चेंज करना होगा. जब आपने अपनी मशीन लैंग्वेज को चेंज कर दिया, देन दोबारा से उस प्रोग्रामर को दोबारा से ये पूरा नया जो सिरे से आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा और मशीन लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है. सो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है. सो दिस आल्सो मींस दैट if we change the computer's instruction list is changed, it would make the program जो आपने जो पुराने प्रोग्राम बनाए थे ओल्ड आर्किटेक्चर के बेस पे, तो वो भी आपके ज़ाया हो जाएंगे,
ठीक है. So moreover, the computer programs written in a machine language are difficult to understand for the humans. यहाँ पे जो आप example मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पे, so this is quite difficult. ठीक है, at least I don't understand what each of these lines of code mean over here. ठीक है. So there's a need to bridge the gap between a human language and the machine language. All of these problems lead to a requirement for some sort of a bridge. ठीक है, एक सब bridge क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, और दूसरी जगह है, उसको वो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए we need some sort of a bridge. So this is, for example, this is the natural language, this is the computer language या machine language, ठीक है, और हमें चाहिए कि in order to make our life easy, we must somehow find some mechanism to bridge this gap. ठीक है, ये जो गैप है नेशनल लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेजेस में, उसको बीच में कुछ हमने ऐसा करना होगा कि वी ब्रिज दिस गैप ओवर हियर. ठीक है, सो दिस ब्रिज विल मेक आवर लाइफ इजियर. सो द ब्रिज इज आल्सो अ लैंग्वेज, and it's also a language, an intermediate common language, ठीक है, for both the humans and the computers working together. ठीक है, such a language is called a mid-level language, and which can be further divided into a high-level language and a low-level language. ठीक है, so ये जो language है बीच में एक intermediate language is which we call the mid-level language. ठीक है, this language enables the humans to write a code which the humans can understand, and this language will then convert that human understandable language into a machine language over here. ठीक है, so there are two types, high level language and a low level language. अच्छा, high level programming क्या है कि ये this is quite close to the natural language. ठीक है, this is quite close, ठीक है, quite close या near to the human understandable natural language जो हो गया आपका. ठीक है, जो human easily पढ़ सकते हैं. आप यहाँ पे अगर इसको पढ़ेंगे, for example, this is triangle, this is float surface है, ठीक है, b times h divided by 2, आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. ये basically this is a formula, breadth times height divided by 2, this will give us the some value over here. ठीक है, so आप basically you're using English words, ठीक है, English language words to write a certain program. So this high level programming language enables humans to write programs in a language which is quite closer to their to what the humans can understand, which is the natural language over here. ठीक है, अच्छा, इसके बरक्स अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में जाएं, ठीक है, लो लेवल प्रोग्राम्स में जाएं, दिस इज क्वाइट क्लोज टू द कंप्यूटर्स अंडरलाइंग आर्किटेक्चर. ठीक है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बी डिफाइन किया हुआ है और वेरिएबल एच डिफाइन किया हुआ है, और उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया. ठीक है, इसी टास्क को, इसी स्पेसिफिक टास्क को अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज में करना है, ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना होगा, तो आपने क्या करना होगा, आपने रजिस्टर्स के साथ क्या वो करना होगा, खेलना होगा. ठीक है, व्हाट आर रजिस्टर्स? रजिस्टर्स आर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, कंपोनेंट्स. ठीक है, डीएलडी में आप इसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे. व्हाट आर डिजिटल लॉजिक डिजाइन कोर्स में रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर रजिस्टर्स, हाउ आर दे मेड. ठीक है, तो उसमें वो जो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर रजिस्टर्स. लेकिन बेसिकली व्हाट आर दीज आर बेसिकली स्टोरेज कंपोनेंट्स. ठीक है, स्टोरेज कंपोनेंट्स इनसाइड ए कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, स्टोरेज कंपोनेंट्स, और उसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली अगर आपने एक वैल्यू 2 स्टोर करना है, 2 कहीं पे स्टोर करना है, या बी वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे स्टोर करनी है, यू यूज द रजिस्टर्स टू अकम्प्लिश दैट थिंग ओवर हियर. ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है कि आपको पता होता है कि आपके अंडरलाइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कितने रजिस्टर्स हैं, उनके नाम क्या वो क्या हैं. तो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू take a variable b and you say that you issue this instruction. Basically this instruction is basically telling the compiler, the computer, to take the value of b variable and save that in the register r1 over here. ठीक है, similarly h की variable की value लें और उसको r2 रजिस्टर में सेव करें. ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, so basically what you do is you take the r1 value and you multiply the r2 value with r1 and save that results back in r1 register over here. ठीक है, ठीक है, and then you divide
जो भी वैल्यू R1 की वैल्यू है उसको आप 2 से डिवाइड करें और उसकी वैल्यू को रिजल्ट को आप R1 में स्टोर करें. सो बेसिकली व्हाट यू डू इज ये एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपने सेवरल 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड में आपने इसको लिखा है. सो लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिकली असेंबली लैंग्वेजेस. ठीक है, असेंबली लैंग्वेजेस ये थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन इट गिव्स यू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर आपने कंट्रोल करना होता है सो यू मस्ट लर्न दीज लो लेवल लैंग्वेज. और ये जो लो लेवल लैंग्वेज है तो ये आप जब आप माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे इन द 5th सेमेस्टर, उमर शरीफ साहब जो हैं, डॉक्टर उमर शरीफ साहब, वो आपको पढ़ाएंगे ये कोर्स. तो उस वक्त आपको फिर और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ए लो लेवल लैंग्वेज. एंड उसके लिए प्रीरेक्विजिट क्या है कि यू लर्न दिस हाई लेवल लैंग्वेज. जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C++ programming, it is a combination of both high level and low level. It supports both languages. High level language भी support करता है और low level language भी support करता है. It's not C++, basically it is C language. ठीक है, C language जो है it supports high level language and as well as low level language. Python जो है, Java जो है, जो भी है वो सिर्फ high level language support करता है. लेकिन C एक ऐसा language है जो both high level language and low level language support कर रहा होता है. ठीक है, and then we have the machine code. ठीक है, तो बेसिकली आप करते क्या है, अगर आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस हाई लेवल लैंग्वेज जो आप which human can easily understand into a machine into a language which the machine can understand. ठीक है, which is the machine language over here. ठीक है, so you need a certain mechanism to translate this thing into this thing over here, the machine language. ठीक है, इसी तरह जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे जो आपने लो असेंबली लैंग्वेजेस में आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको भी आप लोडर के जरिए किसी आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, सो दीस आर जस्ट a high level overview of the three levels of programming language, which is the high level, low level, and then the machine language, which the computers or the digital computer systems can understand over here. ठीक है, अच्छा जी. So in this course we will be focusing on the high level language, which is the C level language. C++ जो है, C++ जो है, it is a high level language which the humans can easily understand over here. अच्छा, high level language क्या है? A high level language is somewhat similar to the natural language. ठीक है, somewhat similar to the natural language. It uses the symbols, words and conventions readable to the humans over here. ठीक है, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में you really know कि what these means. ठीक है, surface क्या है, triangle क्या है, b times h divided by 2, ये एक फॉर्मूला है. ठीक है, you know what these means. लेकिन अगर आप इसी चीज को आपने यहाँ पे, अब मैं आपको इसी को मशीन लैंग्वेज में मैं कोड करके दूं तब फिर आपको पता नहीं चलेगा कि what is this 0001, ये what is the purpose of each of these lines. ठीक है, या what each these lines of instructions actually mean. ठीक है, तो आपको ये नहीं पता, लेकिन this is quite easily comprehensible, understandable. Humans can easily understand what this is over here. ठीक है, तो high level language allows the humans to write their programs in a language which is quite closer to the natural language over here. ठीक है, the language that enables the humans to express complex commands for computers is a high level language. ठीक है, so how is a high level language translated to a computer language? अब मैंने बताया था कि इसको हमने ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में. this is the format that the computers can understand. लेकिन इसको अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे so you need sort of a translator. ठीक है, a translator that will translate what you say in the high level language into the machine language. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो है आपके प्रीमियर जो हैं, एक किसी मुल्क के दो डिफरेंट मुल्कों के प्रीमियर, फॉर एग्जांपल जर्मनी और चाइनीज जो हैं. ठीक है, अगर आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा होता है which can understand both languages, high level language as well as the sorry, not high level language. एक फॉर एग्जांपल जर्मनी है तो वो जो ट्रांसलेटर होता है उसको जर्मन जबान भी आती है और चाइनीज जबान भी आती है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इट डज इज द ट्रांसलेटर
converts the message from the German premier into in German language into a Chinese language, और फिर जो Chinese premier है उसको फिर वो मैसेज कन्वे करता है इन चाइनीज लैंग्वेज। और जब चाइनीज प्रीमियर कुछ बात करता है चाइनीज लैंग्वेज में, द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स दैट लैंग्वेज इनटू जर्मन लैंग्वेज एंड कन्वेज दैट इंफॉर्मेशन टू द जर्मन चांसलर हो गया, जो भी चीज है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और मशीन लैंग्वेजेस हैं, उनके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है विच वी कॉल ए कंपाइलर। ठीक है, ए कंपाइलर। Compiler basically is a translator which translates high-level language into machine language and machine language back to the high-level programming language over here. Acha. What is a compiler? Compiler is a specialized software. Okay, specialized program translator software which can translates the high-level language into machine language and vice versa. ठीक है, this process of translation is called compilation. ठीक है, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको आप रन करने से पहले आप कंपाइल करते हैं। कंपाइल में क्या होता है? कंपाइल में कंपाइलेशन प्रोसेस में एक कंपाइलर जो होता है वो आपके कोड को उठाता है जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है और उसको फिर कन्वर्ट करता है टू दी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और फिर जब वो मशीन कुछ प्रोसेसिंग करके वापस रिजल्ट वो करता है, रिटर्न करता है, वो फिर कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके दोबारा से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको फिर डिस्प्ले करके दे देता है। ठीक है, so a high level language enables us to write programs on any computer without worrying about the underlying computer architecture. जिस तरह मशीन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामर को क्या था, जरूरी था कि वो साथ साथ अंडरलाइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर या हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज रखता हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि द कंपाइलर हैज enabled has made our life much more easier कि आपको इसके हाई लेवल लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि आपको अंडरलाइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ज्यादा वो मतलब नॉलेज हो। ठीक है, सो एनी प्रोग्रामर, इवन the school going kids can learn the computer learn the high level language and try and make their own programs that can interact with the computers. ठीक है, so any such programs written on one computer can easily be used on another computer. This is called portability. अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज का फायदा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का फायदा ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक इंटेल बेस्ड कंप्यूटर पे आपने एक हाई लेवल लैंग्वेज यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर आपने वही प्रोग्राम उठा के यूएसबी में उठा के आपने एक AMD कंप्यूटर पे आपने उसको रन करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों के आर्किटेक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन क्या है कि चूंकि आप यू आर नॉट you don't have to worry about the underlying computer architecture, so basically using the high level language you can port, you can shift that program into the another computer which has a totally different computer architecture. There is a question. Question kya hai? Sir, why don't we use compiler in MATLAB and HTML we studied in first semester and use in C++? ये जो है basically MATLAB जो है, MATLAB is also basically a program that was written in C language as well. ठीक है ना, C++ languages में एक basically MATLAB is written entirely in C language. ठीक है, अच्छा वो जो है HTML जो है, HTML is quite is also an example, और उसको आप कह सकते हैं कि high level language है, लेकिन there are several layers. ठीक है, there are several layers over here. ठीक है, there are several layers before HTML है आपका। HTML जो है, जो कोड है उसको आप फिर कन्वर्ट करते हैं in another format, or there are different layers before it gets converted into the underlying this machine language. ठीक है, तो HTML जो है, every जो आपने जो लिखा होता है, every software it's eventually converted back to the machine language. लेकिन ये जो है, जो programming languages हैं जो हैं, जैसे for example C++, they explicitly require the compiler to translate their programs into a machine language. ठीक है ना, MATLAB जो है, MATLAB has been written on top of has been written using the C++ programming language. ठीक है, not C++, C language, मेरे ख्याल से C language को यूज करते हुए MATLAB बनाया गया है. So it's basically a software. ठीक है, it's a software, और उसका आप executable
वर्जन आप रन करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली इट्स ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोग्राम, ठीक है, और यू डोंट हैव टू अगेन यूज द compilation process in order to run that. अच्छा, so high level language का फायदा क्या हुआ कि it enables portability किस तरह कि आप you don't have to worry about the underlying computer architecture. आपने एक कंप्यूटर पे आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, you can use that and take that program and use it on another computer with having a totally different computer architecture, ठीक है. Let the compiler, जो सॉफ्टवेयर जो है compiler worry about the translation of that program, ठीक है. अच्छा, so क्या हो गया. अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं अभी, ठीक है. अच्छा, आई हैव लेस देन अ मिनट, प्लीज रीजॉइन द सेम सेशन ताकि फिर इसको कहानी को बस वो कर सकें. वी हैव लेस देन few slides left, then we can end today's discussion, ठीक है. So please rejoin the same session and so integrated development environment, ठीक है. So every creative activity needs some tools and programming is no exception. For example, अगर आपको कहा जाए कि कोई डॉक्यूमेंट लिखें, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करें, so what you will be doing is you will be using MS Word, ठीक है. ये तो देखा होगा ना आपने पिछले कोर्स में. MS Word हो गया या टेक्स्ट एडिटर हो गया, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर वगैरह हो गया, ठीक है. So these are basically tools that you use to carry out a certain task, ठीक है. So likewise, a programming language also needs some sort of tools to write your programs, ठीक है. सर आवाज फिर से स्लो है. आवाज फिर से slow है. अब ठीक है. यस सर, अब ठीक हो गया. अच्छा जी. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि प्रोग्रामिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स अ शीट ऑफ पेपर एंड पेंसिल, ठीक है. लेकिन this can become quite difficult, okay. And for writing a program we use something, a tool called integrated development environment, okay. Integrated development environment क्या है? It is a collection of software applications that consists of a code editor, ठीक है. code editor हो गया, compiler हो गया, a debugger and a graphical user interface, ठीक है. अभी इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि what sort of IDE I am using on my computer and how many IDEs, what IDEs are available and which IDE can you use in your on your own computer या smartphones as well, ठीक है. So basically soft IDE क्या है? एक ही टूल है, एक सिंगल टूल है. एक सिंगल टूल के अंदर आपको कोड एडिटर भी आपको मिल जाता है, कंपाइलर भी मिल जाता है, डिबगर भी हो जाएगा. डिबगर बेसिकली is used by software developers to in order to debug their application, ठीक है. To remove any errors और कोई bugs वगैरह हैं वो आप remove कर सकते हैं. Logical errors हैं वो उसको आप remove कर सकते हैं. And a graphical user interface,